Namaskar students, this video for class 9th. Today we are going to start a lesson number 2 in SS, First World War and Russian Revolution. Dear student, till to the 8th standard you have studied regarding about the history, civics and geography of Gujarat history, Gujarat geography, Indian history, Indian geography and politics science and regarding about the constitution. But the first time now you are studying regarding about the world history and world politics. So please listen carefully. आप पहली बार विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना. In this lesson we will study how the first world war, which factors are responsible for the first world war and different politics of the different nations of the world. अभी हम भारत से बाहर जाकर दुनिया का इतिहास जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, उससे पहले की पूर्व भूमिका क्या थी, द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द यूरोपियन नेशंस, which factors the responsible for the first world war. All these things we will study in this lesson, and also we will study about the Russian revolution. What is the Russian revolution? रशिया की क्रांति कैसे आई. तो ये सारी बातें जो आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, because till to the 8th standard you have studied the history and geography of Gujarat and India also. But now we will study, and you are the first time studying the world history. So please listen carefully. The world history, विश्व का इतिहास, कि विश्व के कई देशों ने, खास करके जो यूरोपियन नेशंस है, उन्होंने अलग अलग दुनिया के जो नेशंस है, खास करके जो अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स, उनको कैसे अपने कंट्रोल में किया और क्यों किया. ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस लेसन, द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो द यूरोप कॉन्टिनेंट, you all of you know the Europe continent. The Europe continent yearning of the more and more desired because of to establish their imperialism policy, to establish their rule, and also they expand their rule and expand the territory in the world. So that's why they have to control some nations, they have to capture some nation by hook and crook. जो यूरोप कॉन्टिनेंट को जो नेशंस थे, इसमें इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया, इटली आ गया, जर्मनी आ गया, स्पेन आ गया. दीज ऑल आर द यूरोपियन नेशंस, एंड दीज यूरोपियन नेशंस wanted to more and more land, wanted to more and more territory for expand their colony, expand their rule in all over the world. उनको ज्यादा से ज्यादा जो जमीन चाहिए थी, जो उनको कंट्रोल, उनके कंट्रोल में रहे, उनका साम्राज्य उनको बढ़ाना था. So that types of the attitude and that types of the thinking of the European nations. So that's why the African nations and the Asian nations are becomes victim of the exploitation policy of the European, the greedy policy of the European nations. So let's start from this greedy policy and this exploitation policy from the Asia and Africa continent. So the first topic in colonialism in Asia and Africa. Colonialism, colony मतलब कोई प्रदेश के ऊपर अपना रूल को प्रस्थापित करना और प्रस्थापित करने का प्रयत्न करना, और प्रयत्न करने के बाद वहां पे रूल अपना एस्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड द कॉलोनीज. एंड दैट टाइप्स ऑफ द पॉलिटिक्स इज नोन एज द कॉलोनियलिज्म. के वहां पे अपनी, जैसे ब्रिटिशर्स had made the colony in our India, in the name of the British East India Company. जैसे वो लोगों ने यहाँ पे एक कॉलोनी बनाई थी, अपना एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए उन्होंने अपना एक एम्पायर यहाँ पे बनाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड लिटल दे कैप्चर्ड the all over the India. And these are all the things we had studied in the first lesson, the Indian history. Now we are studying the world history. So these types of the greedy policy in the European nations,
the European nations. So that's why they wanted to acquire more and more territory. So of these types of the attitude, these types of the greedy policy, they cannot spare their own European country also. उन्होंने अपने यूरोपियन कंट्री को भी नहीं छोड़ा, वहां से ही शुरुआत हुई। जैसे कहते हैं भाई किसी भी काम की शुरुआत हम अपने घर से ही करते हैं या तो अपने नियर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियन पीपल, दिस यूरोपियन कंट्री हैज स्टार्टेड this colonialism policy from their own continent, Europe continent. For example, the country of the Europe country, the Spain has taken the control on the Netherlands, Belgium and Luxembourg. These three nations controlled by the Spain, and later on these province controlled by the France. So from their own territory, from their own continent, यूरोप कॉन्टिनेंट से ही उनकी ये जो साम्राज्यवादी नीति है, उनकी जो ये कॉलोनियलिज्म वाली जो परंपरा है, नीति है, वहां से उनकी शुरुआत होती है। देन आफ्टर द पोर्टुगीज किंग डाइड एंड विदाउट हेयर, उनको कोई इनका पुत्र नहीं था। पोर्टुगीज का एक राजा था, वो मर गया और उसको कोई वंश नहीं था, उसकी कोई पुत्र नहीं था। सो दैट्स व्हाई the Spanish king the control this Portugal area. So this is also the second example. Third, the Italy and Germany, these two nations also became victim of this greedy policy, this colonialism policy of the France and Austria. This is the Austria, not Australia. Please listen carefully. This is the Europe continent nation Austria. So Australia is a different nations and different continent, but this is the Austria. So this is the example. The Europe continent themselves cannot spare their own nations also, just like the Spain, the Portuguese, Spain, Italy, Germany, France, Austria. All these nations started this colonialism policy in their own continent first. Then after they entered in the Asia and Africa. So the next topic is the colonialism in Asia. First of all, the Asia continent, our continent, the colonialism policy in Asia. So the England, after the colonialism and after the capturing the India, the England started this colonialism policy in Sri Lanka, Burma, Singapore, Malaysia and China also. So the England started these types of the imperialism policy in these Asian countries, the Asian nations, Sri Lanka, Burma, Singapore, Malaysia and China also. With the China, the England had a trade with the China, and this trade is known as the opium trade. This trade is known as the opium trade between England and China. Opium मतलब अफीम, जो एक प्रकार का जो ड्रग्स है, उसका एक एग्रीकल्चर होता है जो मेडिकल में भी यूज होता है, वो एनेस्थेशिया या तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए। तो डेट टाइप्स ऑफ द ओपियम जो है अफीम, उसका एग्रीकल्चर है, एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर द कंट्री get more and more profit and more wealth money. So this trade started between the England and China. So that's why now the England wanted to take over all the opium, the agriculture of the opium from the China. So that's why the war started between England and China, and this war is known as the Opium Wars between 1839 to 1842. This war is known as the Opium War. So you have to remember this regarding about the Opium War. And the China has lost this Opium War. China हार गया. So that's why China have to give the 5 ports to the England. अपने जो 5 जो बड़े बड़े ports थे, they have to give to England for the trade and these types of the purpose.
So now the China is become weak. चाइना जो था वो एकदम वीक पड़ता हुआ दिखाई दिया. So that's why the different nations entered in this the imperialism policy, just like Japan, Russia, Germany, France, Belgium, America, etc. These nations entered in this imperialism policy, this colonialism policy in the world. So this is a started of the colonialism policy in Asia. Then after, in our Asia continent, in the West Asia, the Gulf country, we can say that is a Gulf country, the Kuwait and Saudi Arabian countries, it is a full of the oil and resources, full of the mineral resources. You all of you know, these countries have full with the minerals, especially for the oil resources in West Asia. So that's why the England, Germany and Russia had captured the oil companies of different West Asian nations, just like Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia. This is SA, that means the Saudi Arabia and Bahrain. So these nations is become a victim of these European nations, England, Germany and Russia, because of their oil resources, because of their minerals, especially for the oil resources. आप लोग जानते हैं कि वेस्ट एशिया में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में है, वो फुल ऑफ द मिनरल्स एंड फुल ऑफ द ऑयल रिसोर्सेस है. तो वहां से कैप्चरिंग करने का स्टार्ट हुआ फ्रॉम दिस कंट्री, इंग्लैंड, जर्मनी एंड रशिया, एंड दे एस्टैब्लिश द ऑयल कंपनीज एंड दे आल्सो टेक ओवर ऑल द ऑयल कंपनीज ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, Saudi Arabia, Bahrain. So thus there is a colonialism is in our Asia. The second, the colonialism in Africa continent. Colonialism in Africa continent. This Asia continent is the desert continent, but although the desert continent, but it is also the full of the oil minerals. So that's why in this desert region, these three nations, particularly England, Germany and Russia, there is made the oil companies in this the Asian in Asia continent. Next, the colonialism in Africa. The Africa continent is also the full of the mineral resources. Africa जो continent है, Asia continent, it is the full of the oil resources, the mineral resources, especially for the oil known. And the Africa continent is also full of the different types of the minerals and resources. So in the 15th century, the Dutch established their colony in the 15th century in South Africa. Then after the England established, the England had captured some region of Cape of North Africa and some region of the France is also captured the some region of Algeria of North Africa. So the Africa continent is also become the victim of the colonialism policy of the European nations, European country. Then after, King Leopold, remember this name, the King Leopold of Belgium, the King Leopold of Belgium had captured the Congo region, the vast Congo region of the Africa, the Congo region of the Africa captured by the King Leopold of Belgium. Then after, the different European nations, just like England captures province of the Egypt, East Africa and South Africa. France has also captured some province of Tunisia, Morocco and West Africa. So these are the colonialism policy, the imperialism policy of European nations in Africa continent. Germany has also captured the East Africa, the West Africa. Italy has also captured some province of around the Red Sea. This is the captured by the Italy. The Spain and different the European nations,
the Spain and Portuguese. The Portugal also there is a captured some province in the Africa continent. So these are regarding about the colonialism policy. We can also say the imperialism policy. इंपीरियलिज्म पॉलिसी का मतलब होता है साम्राज्यवादी नीति. जैसे हम जस्ट फिलहाल अभी आज की बात करें तो हम चाइना के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना इज डूइंग द इंपीरियलिज्म पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति. मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसको बढ़ाते रहना, और दूसरे नेशंस की जो बाउंड्री है जैसे चाइना आज कर रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर का रीजन, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का रीजन वो अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल हम उससे लड़ रहे हैं. सो दैट इज द इंपीरियलिज्म पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी एंड देन आफ्टर द इंपीरियलिज्म पॉलिसी. पहले का जो पॉलिटिक्स थी वो अलग थी. पहले वो ट्रेड के नाम पर वहां पे अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिशमेंट करते थे एंड देन आफ्टर दे डूइंग द इंपीरियलिज्म पॉलिसी. So the Africa, the Europe continent, the nations of the Europe continent, the Italy, Germany, France, England, Spain, Portuguese, these all the European continents captured the different nations of the Asia and Africa. सबने ये सारे जो nations थे वो कंट्रोल में कर लिए. Then after the conference held in the Berlin, the conference held in the Berlin in 1884-85. And what is the conference? To divide their province, to divide their territory. जैसे कोई चोर और लुटेरे की जो उसका जो पूरी जो टीम होती है वो सारा सामान लूट लेती है कहीं से, और बाद में उसको डिवाइड करने के लिए भाई किसके हिस्से में क्या क्या जाएगा. जैसे कहीं एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और बोल देते हैं भाई ये पार्ट जो है वो इतना तू ले जाएगा, इतना तू ले जाएगा, इतना तू ले जाएगा. दैट इज द कॉन्फ्रेंस. सो दैट टाइप ऑफ द कॉन्फ्रेंस, दैट टाइप ऑफ द मीटिंग टू डिवाइड province, to divide the territories between among these all the European nations. And this conference held in the Berlin, the city of Berlin in 1884 and 1885. And the purpose of divided the different province, the different territories of this Asia and African territory among the European nations. यूरोपियन नेशंस के आपस में ये सारी जो टेरिटरी है वो एक बांटने का, क्योंकि अंदर अंदर वो झगड़े नहीं, अंदर अंदर उनके अंदर क्लैश ना हो. सो दैट्स व्हाई दे डिवाइडेड कि ये प्रोविंस है वो इंग्लैंड है वो इसके हिस्से में इतना प्रोविंस है, फ्रांस है वो इतने टेरिटरी में है, स्पेन के अंडर में इतना आता है, पोर्टुगीज के अंडर में इतना आता है, जर्मनी जो डिफरेंट नेशंस है. तो इस तरीके से उनका डिवीजन हुआ, डिवाइडेड पॉलिसी हुई. देन आफ्टर द टू नेशंस बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द यूरोप कॉन्टिनेंट. इंग्लैंड तो स्ट्रॉन्ग था ही. देन आफ्टर द टू नेशंस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दीज नेशंस द इटली एंड स्पेशली द जर्मनी. कि यूरोपियन नेशंस के अंदर पहले इंग्लैंड का जो वो दबदबा था एकदम पावरफुल था. देन आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस इंपीरियलिज्म पॉलिसी all the nations got the wealth and different types of the political power. इसकी वजह से एक दो नेशंस इटली और दूसरा एक नेशंस है that is the Germany, the unified Germany. Now Germany is become a very strong and Germany is a very ambitious types of the nation. बहुत ही महत्वाकांक्षी वाला नेशन था. उसको पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर और पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना एक कैप्चरिंग करना था, एक अपना ट्रेड कंट्रोल करने का था. सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड द कंपटीशन इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन एंड द कॉलोनाइजेशन. सो स्टार्टेड द कंपटीशन. एक टाइम पे ऐसा हो गया कि सारे जो यूरोप कॉन्टिनेंट के जो नेशंस थे वो एक साइड और जर्मनी वो पूरा एक साइड, सबको कंपटीशन दे रहा था. जर्मनी स्टार्टेड द वेरी टफ कंपटीशन विथ all these European nations, and because of this policy they started the competition, and competition started with the quarreling. competition धीरे धीरे झगड़े में तब्दील हो गया और ये झगड़ा धीरे धीरे
कन्वर्ट हो गया, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको हम बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध. तो these are the background for the creating of the first world war. In short, the capturing policy, imperialism policy, colonialism policy, this policy is the responsible for the first world war of the, especially for the European nations. European nations की ये साम्राज्यवादी नीति, ये जो अपना colonialism types of the politics, that is responsible for the first world war, and then after also the Russian revolution. So this is regarding about one background of the lesson regarding about the world history and regarding about the first world war. In the next video we will study the different political factors that are responsible for the first world war. These are regarding about the colonialism by the Europe continent, in Asia and in Africa. In next video we will study the factors responsible the first world war, and it is a very important question also, short note also. Thank you.